ओके नेट एक्चुअली कनेक्शन कटि जाइथिला स्ट्रीमिंग बंद हो जाइथिला पर आउट स्ट्रीमिंग चलछि कि नै गुटे स्ट्रीमिंग तमाने सुनि परछो तार में ऑडिबल होछि तो अरे आ गुटे स्ट्रीमिंग चले तो गुटे स्ट्रीमिंग चलछि तो ठीक है देखिए ओके डिस्कस करथिले कोन को फैक्टर ऊपर डिपेंड करछि फ्रैगमेंटेशन आउ डिस्कस करथिले मॉलिक्यूलर आयन को मॉलिक्यूल पाई शो करिवो को मॉलिक्यूल पाई मॉलिक्यूलर आयन पाइबा नाही तो डिस्कस कला भीतर एतिके में डिस्कस करथिले मॉलिक्यूलर आयन जोठी हमें जोठी मॉलिक्यूलर आयन टा 5 to 10 सेकंड 5 to 10 सेकंड अधिक टाइम एग्जिस्ट करि परियो बा रहि परियो सेटा हबो कोन सेटा होची मोस्ट स्टेबल ताको हम कहबा स्टेबल मॉलिक्यूलर आयन और सही मॉलिक्यूलर आयन पीक हमें पाइबा और जो मॉलिक्यूलर आयन ता 5 to 10 सेकंड रो अधिक टाइम पर्यंत रहि पाउची सेव हे पाउची बा अधिक समय स्टेबल हे पाउची सही भया सही मॉलिक्यूलर आयन रो पीक हमें मास स्पेक्ट्रम पाइबा आ जहार तमे तार लाइफ टाइम कमी जीवो 5 सेकंड रो कम 10 सेकंड रो कम करिवो तार मॉलिक्यूलर आयन पीक हमें पाइबा नहीं ओके तो जनरली हम देखिबा एरोमेटिक कंपाउंड्स माने अछंदी सपोज हमें टॉलुइन नियो तो साइक्लिक कंपाउंड नियो से मानकर मॉलिक्यूलर आयन पीक थाउची बहुत स्टेबल सेमती इन केस ऑफ गोटे टर्शियरी यदि कंपाउंड देखिबा कि टर्शियरी कार्बोकेटन जो हेई पारथो लाइक योर न्यू पेंटेन से केस रे मॉलिक्यूलर आयन थारु डॉटर आयन माने अधिक स्टेबल टर्शियरी अल्कोहल ले भी मॉलिक्यूलर आयन थारु डॉटर आयन का अधिक स्टेबल तो सिंपल जाला जो लाइफ टाइम मॉलिक्यूलर आयन अधिक हबो से केस रे तमे मॉलिक्यूलर आयन डिटेक्ट करि परिबो आ जोठी लाइफ टाइम तार कम हबो जनरल 5 to 10 सेकंड तार टू कम और माइक्रो सेकंड रे जदी लाइफ टाइम हबो त हमें तार पीक मास स्पेक्ट्रम पीक पाइबा नाही देन हम तुम कहितली चारटा फैक्टर को फैक्टर ऊपर हमरा फ्रैगमेंटेशन डिपेंड करछि फर्स्ट तो कहितली एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल एज वेल एज द डॉटर आयन सेकंड फैक्टर तो हम कहितली सेकंड फैक्टर तो हम कहितली जो भारी फ्री रेडिकल तार स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल देन थर्ड फैक्टर तो हम कहितली मोस्ट इंपोर्टेंट वन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटन जो कार्बोकेटन जनरेट हबो तार स्टेबिलिटी केते देन आउ गोटे फैक्टर तो कहितली एनर्जी ऑफ द बॉन्ड इन आयन जो आयन अछि ताको जो एटम मान भितर जो बॉन्ड स्ट्रेंथ से बॉन्ड स्ट्रेंथ ऊपर भी डिपेंड करूची कोटा स्टेबल कोटा लेस स्टेबल कोटा मोस्ट स्टेबल ओके सो हमें फैक्टर डिसाइड करबा फर्स्ट होची जो फर्स्ट फैक्टर होची फर्स्ट फैक्टर होची एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूलर आयन और डॉटर आयन तो एटा बहुत सिंपल कथा जो मॉलिक्यूल अधिक स्टेबल बा जो मॉलिक्यूलर आयन फॉर्मेशन करिया पय अधिक एनर्जी दरकार हबो से केस रे हम कवर परिबा से केस रे एनर्जी अधिक दवा पड़िबो बा अधिक एनर्जी कंज्यूम हबो टू फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर आयन मॉलिक्यूलर फॉर्मेशन ऑफ डॉटर आयन पय भी कोन दरकार हबो अधिक एनर्जी दरकार हबो बट जो केस रे मॉलिक्यूल बा मॉलिक्यूलर आयन टा लेस स्टेबल हबो जो केस रे हम इजीली आयनाइज करि पारथो मॉलिक्यूल को से केस मन करे
डॉट आयन इजिली फॉर्मेशन सो इट इज फास्ट फैक्टर जो मॉलिक्यूल माने इजिली आयोनाइज हो पारथुबे से केस रे हमको कम एनर्जी दरकार जोठी मॉलिक्यूल माने अब आयोनाइज होबे अधिका दरकार एनर्जी अधिका स्टेबल गोटे मॉलिक्यूल थिबो से हमें अधिका एनर्जी दबा पड़िबो देन हमें स्टेप टू जो कंडीशन फ्री रेडिकल हमें फ्री रेडिकल बाहर करछंती हमें जो फ्रैगमेंट करथिले जनरली हमें जो देखिबा होमोलिटिक फ्रैगमेंटेशन हेटेरोलिटिक फ्रैगमेंटेशन देखिबा तो जो फ्री रेडिकल बाहर तार स्टेबिलिटी डिपेंड करे फ्री रेडिकल बाहरुची थर्ड पार्ट इज द फ्री रेडिकल जो हमर अछि फॉर्मेशन ने गोटे आसीबो स्टेरिक फैक्टर गोटे आसीबो फ्री रेडिकल फॉर्मेशन ने गोटे फैक्टर आसीबो स्टेरिक फैक्टर तो जब गोटे स्टेरिकल हिंडर्ड फ्री रेडिकल बाहर और लेस स्टेरिकल हिंडर्ड फ्री रेडिकल बाहर तो से केस देखा जाए कौन जोटा लेस स्टेरिकल हिंडर्ड से भाया फ्री रेडिकल इजिली बाहर जाओ बोली समस्त प्रिफर कर ओके जो इजिली तुम बाहर बड़ ग्रुप बाहर कर अपेक्षा छोट ग्रुप बाहर कर इजी से जो फ्री रेडिकल इजिली रिलीज हो से प्रोसेस फॉलो कर मोस्ट इंपोर्टेंट वन आम जो कहते कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी ऑलरेडी डिस्कस कर सरचंती जिते अधिका स्टेबल हो कार्बोकैटायन ओके जिते अधिका स्टेबल हो सेते सेही पाथ सेही प्रोसेस को हम फॉलो करिबा जो प्रोसेस फॉलो कले हमें मोर स्टेबल कार्बोकैटायन पाइबा दैट विल बी द फ्रैगमेंटेशन पाथवे सेही फ्रैगमेंटेशन पाथवे रे हमर फ्रैगमेंटेशन हबो जो पाथवे फॉलो कले वी विल गेट ए स्टेबल कार्बोकैटायन ओके ऑलरेडी स्टीफेंसन रूल हमें डिस्कस कर सरचंती जो पाथवे फॉलो कले हमें स्टेबल कार्बोकैटायन पाइबा सेही पाथवे हमें फॉलो करिबा सो कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी डिपेंड कहा ऊपर करे तुम माने आंसर दियो को फैक्टर ऊपर हमर कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी डिपेंड करिबो तुम माने से आंसर ता मते दियो को फैक्टर ऊपर कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी डिपेंड करिवो तुम माने आंसर दियो कहा ऊपर कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी डिपेंड करिवो तुम माने जानिचो आंसर दियो कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी कहा ऊपर डिपेंड करे तुम माने को फैक्टर ऊपर आमर डिपेंड करे इंडक्टिव इफेक्ट रेजोनेंस हाइपरपोजिशन पोलराइजेशन प्रेजेंस ऑफ प्लस साइड ग्रुप अच्छा और वन आंसर दियो ठीक है दीटा ठीक कहछु वन आंसर दियो वन आंसर दियो आ कोन हो स्टेरिक फैक्टर आ कोन हो तो जनरली हमें देखिबा कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी सबुठ अधिका डिपेंड करे कहा ऊपर सबुठ अधिका डिपेंड करे इंडक्टिव इफेक्ट बा सबुठ अधिका रिजोनेंस इंडक्टिव इफेक्ट एटा मेजर सब देन हमें आसीबा और हाइपर कन्जुगेशन हो से हाइपर कन्जुगेशन भी इंडक्टिव इफेक्ट से सम हाउ लिंक रहउची देन हमर आसीबो पोलराइजेशन स्टेरिक फैक्टर अदर फैक्टर माने आसीबे सो कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी कहले हमें ए सब फैक्टर हम देखिया पड़िबो के रेजोनेंस स्टेबलाइज होउची के स्टेबलाइज हो ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट और किछि केसेस इंडक्टिव इफेक्ट मींस हाइपर कन्जुगेशन पाई होउची तो से फैक्टर सब फैक्टर हम देखिबा इंडक्टिव इफेक्ट रेजोनेंस मेजरली रीटा फैक्टर तो माने बेसी देखिबो से अनुसार कार्बोकैटायन कोटा स्टेबल हबो कोटा अनस्टेबल हबो जो कार्बोकैटायन स्टेबल हबो आ गोटे तो मॉलिक्यूल लेले पॉसिबल कार्बोकैटायन कोन होउची ता भीतर कोटा सब मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन सेटा तमे चूज करबो जो पाथवे फॉलो करले हम सेटा पाई परिबा दैट इज द फ्रैगमेंटेशन पाथवे फॉर दैट पर्टिकुलर मॉलिक्यूल ओके पर्टिकुलर मॉलिक्यूल ले से पाथवे फॉलो करले हमें कोन पाइबा पर्टिकुलर से पाथवे रे हमें पर्टिकुलर से पाथवे रे फॉलो करले हमें को
गोटे मॉलिक्यूल नेले तो जानिदेल कौन पॉसिबल कौन कौन बाहर कार्बोकैटायन तो जो पाथवे फॉलो करके सब स्टेबल कार्बोकैटायन माने रिलीज हो पारिबो सेटा हबो सब बेस्ट पॉसिबल फ्रैगमेंटेशन पाथवे फॉर दैट मॉलिक्यूल ओके तो स्टेबिलिटी डिसाइड केमती करू जान लो इंडक्टिव जान तुम माने रिजोनेंस जानि छ ए जो फैक्टर हम ऑलरेडी डिस्कस करछन रिजोनेंस इंडक्टिव सेही फैक्टर ऊपर डिपेंड करे कोन कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी ओके देन हमें नेक्स्ट डिस्कस करबा को टाइप रो अछि तुमको यदि मटेरियल देखियो मटेरियल तुमको कोन देथिले मटेरियल तुमको जो देथिले फोर टाइप्स रो देथिले ताको डिस्क्राइब कराइ छै नोट रो बेसिकली के गोटे अछि सिग्मा इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन ओके गोटे सिग्मा इलेक्ट्रॉन फोर टाइप्स रो फ्रैगमेंटेशन डिस्कस करछंती गोटे सिग्मा इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन सेकंड अछि रेडिकल साइट इनिशिएशन थर्ड होची चार्ज साइट इनिशिएशन और रीअरेंजमेंट पर्टिकुलर रीअरेंजमेंट रे मोर बेसिस को आसीबो मैक लेफेटी रीअरेंजमेंट सेटा हम स्पेशली डिस्कस करिया पूरा दैट इज अ शॉर्ट नोट सो सिग्मा जो आयनाइजेशन सिग्मा बॉन्ड आयनाइजेशन सेटा मुख्यतः हम कोड पाइबा हाइड्रोकार्बन केस अधिक पाइबो सब केस रे आसीबो बट हाइड्रोकार्बन सब अधिक पाइबो कोन सिग्मा इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन हम जो मिथेन पढ़ी न्यू पेंटेन पढ़ी जहाँ भी देख से कौन हो तो सिग्मा बॉन्ड पाए बॉन्ड ना ये तो पाए बॉन्ड ना केवल सिग्मा बॉन्ड तो आमको जहाँ सिग्मा बॉन्ड भांगे पड़ो ओके ब्रेक सिग्मा बॉन्ड कारण पाए बॉन्ड से ना से केस कौन करा जाए कौन सिग्मा बॉन्ड अच्छी कहबी नेक्स्ट डिस्कस आसवा फ्रैगमेंटेशन से डिस्कस करवा कौ घंटा फ्रैगमेंट करुच्ची कहीं एटा डिस्कस करवा आज खाली ओवरऑल फ्रैगमेंटेशन पार्ट गुड़ा कही दूची तो सिग्मा बॉन्ड कौन है सिग्मा बॉन्ड एनालाइज करवा तो गोटे बॉन्ड मीन्स टू इलेक्ट्रॉन्स सो सिंपली आम बम्बार्डमेंट करके इलेक्ट्रॉन बम्बार्डमेंट करके गोटे सिग्मा बॉन्ड टू गोटे इलेक्ट्रॉन बाहर करगले तो गोटे प्लस हो गला फ्री रेडिकल हो गला गोटे इलेक्ट्रॉन पळेले जो इलेक्ट्रॉन पळेला से जगह कौन है प्लस आ गोटे दीटा इलेक्ट्रॉन गोटे रही गला डॉट दैट मींस गोटे इलेक्ट्रॉन बाहर गला परे हम कौन पाउछंती गोटे रेडिकल कैटायन हम गोटे रेडिकल कैटायन पाउछंती सो से जो गोटे रेडिकल पड़ेबो से जो रेडिकल कैटायन रेडिकल पळेले हम कौन पाइबा हम गोटे कैटायन पाइबा ऑटोमेटिकल नहीं डॉट थिला प्लस थिला डॉट से नहीं पळेला आ प्लस रहइबो सो हम गोटे रेडिकल कैटायन हम जनरेट करबा इन केस ऑफ सिग्मा योर सिग्मा आयनाइजेशन देन देखिबा रेडिकल साइट इन आयनाइजेशन केमते रेडिकल साइट इनिशिएशन करा होची दिस टाइप एटा हम पूरा फॉलो से पढिबा कोठी नोट जो होची हम पढि जे हम डिस्कस करबा देखिबा हेटेरो एटम जो एक्चुअली हेटेरो एटम जो थिले लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन थिले लोन पेयर थाए लोन पेयर कोन थाए लोन पेयर आगे लोन पेयर थिबो तब आयनाइज करले लोन पेयर जो दीटा इलेक्ट्रॉन थिबो लोन पेयर मतलब टू इलेक्ट्रॉन्स सो गोटे इलेक्ट्रॉन टा बाहर के पड़ी थिबो ड्यू टू बम्बार्डमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें इलेक्ट्रॉन बम्बार्डमेंट करे कि गोटे इलेक्ट्रॉन विदा कर देथिबा कोन हेतिबो से लोन पेयर ऊपर माने जो दीटा लोन पेयर थिला गोटे पड़ेला ता ऊपर कोन जो प्लस डॉट जो प्लस डॉट हो तो सेठी कोन हो आ गोटे जो अल्किल ग्रुप थिबो आर पटे तर आर आर CH2OH अछि ओके आर CH2OH से एग्जांपल तुमको दोछु OH लोन पेयर अछि Y गोटे लोन एटम जार लोन पेयर अछि तो Y रू कोन पड़ेला Y रू गोटे इलेक्ट्रॉन पड़ेला ड्यू टू बम्बार्डमेंट इलेक्ट्रॉन रहला कोन डॉट प्लस एक पर जो R लागते CH2 से R डॉट ता भांगी गले कोन होला CH2 डॉट एक्स वाला O डॉट से डॉट डॉट मिसे गोटे बॉन्ड कर दे ओके तो मैं देखि परियो खाता रेटा करि जो फास्ट तुमको देखो तुम जो पार्ट तुम पढि दिन गोटा तुम जो पार्ट ता पढाई छी नोड 1 होमोलिटिक लेवल्स ठीक नोड वाला डिस्कशन करिया तो सेटा हो रेडिकल साइट इनिशिएशन कोठी रेडिकल फॉर्मेशन हबो देन आसीबो चार्ज साइट कोठी चार्ज साइट आछी ओके देन हम देखिबा कोठी चार्ज साइट फॉर्मेशन हबो इठी बेले बेले कोन हुए डायरेक्ट कार्बोकैटायन जनरेट हबो माने कोन जोठी तुम जो आटा तुमको डॉट ही जाउतला या पूर्व चने जो रेडिकल रिएक्शन पड़िले रेडिकल कोन हला यार डॉट आउ ए जो r डॉट ता भांगी गला CH2 डॉट तो मिसी के बॉन्ड करथला तो r डॉट भारथला माने फ्री रेडिकल भारथला किछि केस रे कोन हो सेटा r प्लस की भांगीबो डॉट की भांगीबो तो सेटा हले कोन हो ता पूजन हमें चार साइड रिएक्शन रीअरेंजमेंट तो मैक लेफेटी डिस्कस करिया डिटेल डिस्कस करिया बहुत ब्रीफली
तो से व्यस्त हवा ना तेज आम जो ब्रीफली आम डिस्कसन नोट पार्टा जो लिखिकी पठेली तो आम देखा डिफरेंट टाइप्स से मुख्य जो क्लीवेज कर होमोलिटिक रोचे हेट्रोलिटिक क्लीवेज रोचे देन आम देखा रेट्रो डायल सेल्डर जो रिएक्शन माने डायल सेल्डर रिएक्शन कौन कर डाइन डाइनोपेल नौ डाइन डाइनोपेल नहीं गोटे डायल सेल्डर रिएक्शन होता आम उल्टा करिया गोटे आल्केन थी भांगिकी डायल सेल्डर रिएक्शन कर रेट्रो रेट्रो माने अपोजिट है तुम रिएक्टेंट नहीं पाँच प्रोडक्ट आम कौन करिया प्रोडक्ट रू बाहर करिया रिएक्टेंट सेटा होची रेट्रो डायल सेल्डर रेट्रो सिंथेसिस और रेट्रो डायल सेल्डर रिएक्शन अपोजिट आसीबा प्रोडक्ट रू रिएक्टेंट को आसीबा ओके दैट इज टाइप फर्स्ट आसीबा सिंपल क्लीवेज रे हमर होची कोन सिंपल क्लीवेज होची होमोलिटिक हेटेरोलिटिक क्लीवेज then आसीबो रेट्रो डायल सेल्डर क्लीवेज दैट इज a rearrangement type cleavage and third row hydrogen transfer and fourth one row जो रोची McLafferty rearrangement McLafferty rearrangement is a different one okay a different rearrangement सेटा हम देखि परिया को केस रे अपन डिस्कस करिबा तो फर्स्ट हम जिबा simple cleavage and that of homolytic cleavage you know homolytic cleavage हम कहले देखिबा आंसर देलो homolytic cleavage कहले कोन बुझछो मत आंसर देलो देखिबा तो माने होमोलिटिक क्लीवेज कहले कोन बुझो त आंसर व्हाट इज होमोलिटिक क्लीवेज होमोलिटिक क्लीवेज त माने कोन बुझो होमोलिटिक क्लीवेज तुम माने कौन बुझुच एनीवन होमोलिटिक क्लीवेज आंसर दियो ऑडिबल होछ तो नेटवर्क प्रॉब्लम होछ स्टिल आंसर दे डिस्कस करबे होमोलिटिक क्लीवेज आई एम ऑडिबल नहीं बुझिगल होमोलिटिक क्लीवेज बॉन्ड डिवीजन इक्वली हो फ्री रेडिकल फॉर्मेशन हो ओके तो दीटा जो इलेक्ट्रॉन थिबो दीटा इलेक्ट्रॉन दीटा जो एटम बॉन्डेड थिबे दीटा इक्वली शेयर करबे दैट इज कॉल्ड होमोलिटिक क्लीवेज ओके सो होमोलिटिक क्लीवेज रे जो देखिबा फर्स्ट एग्जांपल तुमको दिखाई छे से खाता सो लिखि छ हो जो खाता लिखि सार थिबो तो जो बॉन्ड दिखाई छे आर सी एच एक्स गोटे हेटेरो एटम तापर कोन छ डॉट प्लस अछि दैट मींस दैट इज अ मोलेकुलर आयन डॉट प्लस माने रेडिकल कैटायन दैट मींस इट इज अ मोलेकुलर आयन फर्स्ट फॉर्मेशन होछि and R dash okay ए अछि से मोलेकुलर टा R C H X अछि X डॉट प्लस अछि and right side R dash अछि the dot means dot plus radical cation तो देखो जो CH R dash अछि जो से बॉन्ड टा भांगीबो ओके जो CH R dash समस्त खाता देखो तमान जो लिखि छ से खाता देखो तो CH R dash अछि तो से बॉन्ड टा भांगीबो ताले कोन हम पाइबा हमें पाइबा CH डॉट R dash डॉट ओके CH डॉट R dash डॉट तो कार्बन ऊपर जो डॉट अछि X जो डॉट अछि हां करिवो से गोटे बॉन्ड करतो ओके तुम जो आयन पाइबो R CH डबल बॉन्ड X प्लस R डॉट बा R dash डॉट जहां तुम बाहर कर दे R डॉट बाहर कर दो ताले
যদি r डॉट बाहर करिवो सेला भी हेई परबो r डैश डॉट बाहर करिवो हेई परबो तम इच्छा तुम कोटा गोटे बाहर करिवो आइदर दीटा अछि अल्किल जे कोन से गोटे अल्किल बॉन्ड टा भांगी देले कोन गोटे होमोलैटिक क्लीवेज करछो फ्री रेडिकल बाहरिवो कार्बन पर जो फ्री रेडिकल हो c डॉट तापर कोन हो x ऊपर जो डॉट प्लस अछि x डॉट c डॉट x डॉट दीटा डॉट डॉट मिसी कोन बॉन्ड कर दे दीटा फ्री रेडिकल दीटा इलेक्ट्रॉन मिसी कर बॉन्ड हे गेला फॉर्मेशन कोन हला तम r डैश ch डबल बन x अछि r डॉट बाहर करछ तम तो एटा ठीक बुझी न पाल बचारा ए पार्ट के बुझी न पाल बचारा के बुझी न पाल बचारा के बुझी न पाला बचारा देन मैं आगो पार्ट करबी ओके देन और कहते से देखिए से जो लिखाई टाइप 1 अल्फा क्लीवेज कह जाए अल्फा क्लीवेज माने जो बॉन्ड थी बा जो थ्रो आर सी एच ओ एच जो नहीं आर सी ओ एच आर डैश नहीं आई नहीं देखिए बोला से आर सी एच ओ एच आर डैश कंपाउंड नहीं आई से केस रे फर्स्ट आयोनाइज कर दियो फर्स्ट आयोनाइज कर दियो कोन पाइबो लोन पेयर कोन पाइबा जब लोन पेयर अछि लोन पेयर गोटे इलेक्ट्रॉन बाहर के जीवो तो बाहरी गले पाइबा कोन रेडिकल काटायो आर सी एच ओ एच ऊपर डॉट प्लस रहइबो एंड आउट आर डैश देन मतलब ब्रेक करिबा आर सी एच ओ एच डॉट प्लस थिबो एपर आर डैश थिबो जे कोन से गोटे आर ग्रुप भांगिबो से कोन करिवो से गोटे भांगला माने आर डॉट के आर डैश डॉट के पळेबो कार्बन ऊपर कोन आसीबो कार्बन ऊपर डॉट आसीबो तो ऑक्सीजन ऊपर जो डॉट ऑक्सीजन फ्री रेडिकल कार्बन जो डॉट अछि दीटा डॉट डॉट एले कोन ना दीटा इलेक्ट्रॉन मिसी गोटे बॉन्ड कर दबो अगेन पाइबा कोन पाइछन सिटी आर डॉट ता बाहरची पाइछती आर सी एच ओ एच ऊपर प्लस अछि पाइछन कंपाउंड तो ई टाइप रो क्लीवेज हमें देखिए माने अल्फा रे जो थिबो तीटा अल्किल ग्रुप अछि कोन से अल्किल ग्रुप नहीं परिबो अल्फा पोजीशन जो ग्रुप थिबो तीटा ग्रुप भीतर गोटे ग्रुप तो नहीं परिबो विथ चेनस ना फ्री रेडिकल तो डॉट पड़ले डॉट रहले कार्बन पर रही जो कार्बन भांगीबो तापर कोन फ्री रेडिकल से कार्बन गोटे हेटेरो एटम लागि थिबो हेटेरो एटम ऊपर कोन थिबो फ्री रेडिकल एंड प्लस हेटेरो एटम फ्री रेडिकल कार्बन फ्री रेडिकल इसी गोटे कोन कला बॉन्ड डबल बॉन्ड हे गेला प्लस रहले ओके तुम बुझी पाते तो माने then mode 2 type दबा so first mode 1 टा जो type 1 टा बुझी पारलो कि नहीं then हम type 2 बुझीबा then type 2 बुझी पातो type 2 बुझी डायरेक्ट type 2 बुझी ठीक अछि type 2 देखो ये डिस्कस करबा किछ आ जिंस नेक्स्ट खाली करबा आज भी प्रॉब्लम नेट रहउछि त माने लागुन त माने पूरा ऑडिबल ही परछन मो कथा सुनी परछन बोल से तो टाइप 2 इन केस ऑफ टाइप 2 देखो टाइप 2 एक्चुअली पर्टिकुलरली हम को पय देखबे एटा पर्टिकुलर कार्बोनिल कंपाउंड केस देखिबा कार्बोनिल कंपाउंड लाइक हम को कहलो कीटोन एल्डिहाइड एस्टर से केस माने हम टाइप 2 देखिबा जोठी डायरेक्ट कोन होबो हेटेरोएटम जो कार्बोनिल ग्रुप अटैच हेतिबो बाहर जीवो और असाइलम आयन पाइबो ओके RCO+ तो असाइलम आयन जानि छ बहुत स्टेबल ओके हम जानि छ असाइलम आयन बहुत स्टेबल तो R दबल जो RCO देखो RCO मतलब कोन हेतिबो RCO R डैश पडे कीटोन धर नबा RCO R डैश ताको आगे इलेक्ट्रॉन बीम दबा इलेक्ट्रॉन बीम दे आयोनाइज करबा आयोनाइज करले कोन पाइबा ऑक्सीजन अछि ऑक्सीजन पर कोन थिबो लोन पेयर अछि तो आयोनाइज करले गोटे इलेक्ट्रॉन पळेला तो गोटे इलेक्ट्रॉन गला माने कोन हो प्लस क्रिएट हे जिवो सो हम पाइले कोन RC डबल बॉन्ड O ऊपर डॉट प्लस और राइट से कार्बन राइट रे कोन R डैश ओके ई हला मॉलिक्यूलर आयन देन कोन करबा देन जते बेला में चेक कोन जे पर R के R डैश जा भी गोटे तो आके जते बेले बॉन्ड भांगिबो तो RCO R डैश अछि जे कोन से गोटे बॉन्ड भांगले कोन होबो C ऊपर डॉट आसीबो तो कार्बन डॉट O डॉट तो कार्बन डॉट O डॉट जो होबो सेटा कोन हे जिवो
आर सी ट्रिपल बॉन्ड ओ ऊपर प्लस हो कारण आम डॉट प्लस थिला ओ रो डॉट और कार्बन डॉट मिसी कौन है डबल बॉन्ड थिला ट्रिपल बॉन्ड हेगला तो आर सी ओ प्लस फॉर्मेशन है जो क्वेश्चन कर जो बॉन्ड पेयर और लोन पेयर भीतर आगे इलेक्ट्रॉन लोन पेयर तो जो यस लोन पेयर हो कारण लोन पेयर आम नबाटा इजियर कारण लोन पेयर केवल गोटे न्यूक्लियस कंट्रोल थाए आम डिस्कस कर लोन पेयर मान बदमाश नबाटा इजी आ बॉन्ड पेयर टा कौन बॉन्ड पेयर टाइप 1 सेम देखो टाइप 1 सेम थी जी टाइप 1 तुम देखिबो जो हमें करछन आर सी एच एक्स पूरा इसे ही है टाइप 1 किछि तो प्रॉब्लम ही को टाइप 1 ने कोठी तोर ये करा है कोठी तुमको जो हमें जो नोट जो लिखा है बा बॉन्ड सिटी करा है से देखो एक्स रे कोन अछि एक्स डॉट प्लस करा है एक्स डॉट प्लस अछि तो टाइप 1 में हेती कोन टाइप 1 जेंते आर एटा कोन पर्टिकुलर एटी जो टाइप 2 डिस्कस करछन पर्टिकुलरली कार्बोनिल कंपाउंड पाई आसी गला सेठी सब गोटे हेट्रो एटम थिबा कंपाउंड जे कोन गोटे हेट्रो एटम कंपाउंड हेई परिबो सल्फर हेई पारे NH2 थिबा अमीन हेई परिबो OH सेठी अछि OH भी हेई पारुछि तो टाइप 1 से ही देखो x ऊपर डॉट प्लस क्रिएट हेछि x ऊपर डॉट प्लस क्रिएट हेछि गोटे r डैश बाहर की पडुछि तो कार्बन डॉट x ऊपर डॉट मिसी कोला डबल बॉन्ड हे होछि r डॉट पारुछि नो प्रॉब्लम टाइप 1 टाइप 2 देखो टाइप 2 सेम होछि नहीं टाइप 2 सेम टाइप 2 आर सी ओ आर डैश अछि तो ऑक्सीजन लोन पेयर अछि ताको दे इलेक्ट्रॉन बीम देले ओ ऊपर डॉट प्लस हे गेला तो डॉट प्लस क्रिएट हला पर कोन पाइबो डॉट प्लस क्रिएट आर डैश गला पर आर सी ट्रिपल बॉन्ड ओ पाउछु नै कि कारण आर सी ओ डॉट ओ ऊपर डॉट प्लस अछि सी को लागि आर डैश तो गोटे आर के आर डैश पळेला तो कार्बन पर कोन डॉट रहि जिवो ओ ऊपर डॉट थिला कार्बन डॉट ओ डॉट मिसी कोन ला ट्रिपल बॉन्ड ओ ऊपर प्लस रहला तो आसाइलमा इंफॉर्मेशन होछि मे बी आर डैश सी ओ प्लस और आर सी ओ प्लस आ भी हो तो जैसा लेम इंफॉर्मेशन सब बेले एनी कार्बोनिल कंपाउंड थिले फॉर्मेशन होबो ओके ड्यू टू होमोलिटिक क्लीवेज ऑफ इथर केस ना इथर केस अलगा देखियो इथर केस डिस्कस करिया इथर केस अलगा इथर केस आसी तो बोल इथर केस आसी आगु पढिया हेटेरोलिटिक क्लीवेज पढला इथर केस पढिया ओके तो ए पार्ट क्लियर हो गेल देन हमें जिबा टाइप 3 टाइप 3 देखिबो टाइप 3 कोन अछि टाइप 3 पर्टिकुलर हम आसुची जोठी रीअरेंजमेंट एक्चुअली हे छला टाइप 3 जो फ्रैगमेंटेशन हुए आ इठी जो फ्रैगमेंटेशन हमें करिया कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन ओके इठी जो फ्रैगमेंटेशन हबो बा क्लीवेज हबो कार्बन कार्बन क्लीवेज हुए समटाइम्स कार्बन हाइड्रोजन क्लीवेज ओके कार्बन कार्बन क्लीवेज और कार्बन हाइड्रोजन क्लीवेज हुए सपोज मु तुम बहिर तो एग्जांपल जो निहाई छी तुम नोट रे देखिबो बेंजीन रिंग निहाई छी CH2R दिहाई छी नहीं बेंजीन रिंग CH2R दिहाई छी आर जे अल्फा ग्रुप एठी निहाई छी और R रे H लो जानो छ नियो तुम इच्छा एठी जो क्लीवेज हबो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन मूवमेंट कले जे को हम सपोज मु टॉलुइन नेली ओके R जगह H कर दियो जो निहाई छी R CH2R सॉरी वो निहाई छी कोन बेंजीन रिंग निहाई छी ताको लागि छी CH2 और R जगह H कर दियो सो H करले तो कौन पाइबा RCH2H अच्छी एंड H जो RCH2H अच्छी तमे सॉरी RCH2H और बेंजीन जो अच्छी टॉलुइन नहीं जाओ पर टॉलुइन कर देली बेंजीन रिंग CH2H हैला और CH3 नहीं तो सेठी आयनाइज करबा जो कार्बन ऊपर जो CH3 अच्छी तीनटा CH बॉन्ड अच्छी ताको इलेक्ट्रॉन बम्बार्डमेंट करले जे कोन से गोटे CH बॉन्ड रो गोटे इलेक्ट्रॉन पळेबो सो यू विल गेट तमे कोन पाइबो तमे पाइबो कोन H ऊपर गोटे इलेक्ट्रॉन बाहर की पळेबो गोटे CH बॉन्ड जो थिबो जे कोन से CH बॉन्ड रो गोटे इलेक्ट्रॉन बाहर जिवो आ पाइबो कोन प्लस आउ डॉट पाइबो ओके तो प्लस आउ डॉट जो पाइबो ताले कोन होबो तापरे नेक्स्ट स्टेप H डॉट हमर H डॉट भांगिबा H डॉट बाहर की पळेला गोटे H डॉट नै जाओ H डॉट नैबा हम कोन पाइबा CH2 प्लस पाइबा आउ थरे पूछो टॉलुइन थिला टॉलुइन माने कोन बेंजीन ऊपर CH3 तीनटा C को तीनटा कार्बन तीनटा H सहित CH बॉन्ड करिछि क्लियर टॉलुइन मु नेली एग्जांपल निहाई छी बेंजीन रिंग CH2R या निहाई एग्जांपल R जगह H नै गली सो टॉलुइन बर्तन नेली टॉलुइन देखिबा बेंजीन कोन लागि CH3 कार्बन सहित तीनटा H बॉन्ड अछि CH तीनटा बॉन्ड अछि नै
तीनटा एचएच बॉन्ड अच्छी सो तीनटा जो एचएच बॉन्ड अच्छी कार्बन को प्रति बॉन्ड रे कौन टू इलेक्ट्रॉन्स वन बॉन्ड टू इलेक्ट्रॉन ताको हमें आयनाइज करबा बाय मींस ऑफ अप्लाइंग हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स तो एनर्जी इलेक्ट्रॉन अप्लाई करबा जे कोन सी सीएच बॉन्ड रो तीटा इलेक्ट्रॉन जे कोन तीनटा जो इले अच्छी सीएच बॉन्ड जे कोन सी सीएच बॉन्ड को गोटे इलेक्ट्रॉन के नहीं गला बॉम्बार्डमेंट करे मार्क कर देले तो प्लस क्रिएट हो गला सो दैट इज मॉलिक्यूलर आयन तापर स्टेप रे गोटे एच डॉट भारी गला एच डॉट भारी गला पाइबा कोन CH2 प्लस बेंजाइल कार्बोकेटायन एंड बेंजाइल कार्बोकेटायन इज हाईली स्टेबल ओके बेंजाइल कार्बोकेटायन हाईली स्टेबल तो सेटा बेले बेंजाइल को रीअरेंज के ट्रोपिलियम भी हे परिबो M बाय E बोथ सेम बेंजीन पय जा ट्रोपिलियम पय शेयर होइबो ओके बेंजाइल पय जा हबो ट्रोपिलियम से हबो कि रीअरेंज हे से ट्रोपिलियम हे जाय आगे बेंजाइल हबो बेंजाइल रीअरेंज के ट्रोपिलियम हे जाय सो बट M बाय रेशियो बोथ के सेम तो रीअरेंजमेंट देखियो हमें आगे जे पढिबा तळे ब्यूटेन ने पढिबा एते बेले फ्रैगमेंटेशन देखिबा केमिति CH2 प्लस पाउच को रीअरेंज हे कि CH मजु सेकेंडरी कार्बोकेटायन हो जे एटी सेमति रीअरेंज हे गला बेंजाइल टा रीअरेंज हे गला कोन ट्रोपिलियम 7 मेंबर रिंग कार्बोकेटायन तो एई पाटे के बुझन पालो पचार पचार कार्बन डाइऑक्साइड पचार सही पार्ट जो पाटा गला सकाळासी कर देगी ये करते कर दे वो सब बुझ पालो नहीं ठीक अछि हम नेक्स्ट हेटेरोडिक क्लीवेज जोडा बे कोथलो इथर बीट आसीबो सो हेटेरोडिक क्लीवेज फास्ट हम देखिया जनरली को माने बॉन्ड अछि के क्लीवेज करिवो डिपेंड कर एटम ऊपर एक्चुअली फर्स्ट दे हालोजन थिबो पर्टिकुलर इन केस ऑफ अल्किल हैलाइड्स सिटी पर्टिकुलर डिपेंड करे कोन एटम अछि ओके जो कि सपोज आयोडीन ब्रोमीन थियो तो से केस रे समान भारी जिवे ओके कारण आयोडीन से बॉन्ड वीक लार्ज साइज सिटी आयोडीन टा आई डॉट हे भारी जिवो ओके बट क्लोरीन जो थियो भी यार हालोजन थिले तनाले कोन हम सिटी ओ जो पर्टिकुलर डिस्कस हेटेरोडिक क्लीवेज एठी हमें जनरली कोन बेसी पाइबा प्लस माइनस कथा बेसी आसो लाइक हेटेरोडिक माने अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन स्टिल तमे जते बेले भी गुटे मास स्पेक्ट्रा फ्रैगमेंटेशन करिवो से दीटा दिन फॉर्मेशन हो आइदर गुटे जरा भी हमें बेसिक प्रिंसिपल लिखछंती आइदर ऑड मॉलिक्यूल मींस ए रेडिकल कैटायन फॉर्मेशन नहीं पारे दैट इज अ पॉसिबिलिटी आ गोटे चांस होची पॉसिबिलिटी ऑफ इवन माने केवल रेडिकल फॉर्मेशन हो कैटायन जो सॉरी केवल कैटायन फॉर्मेशन हो रेडिकल नथिबो रेडिकल कैटायन में केवल कैटायन फॉर्मेशन हो दीटा हुई आइदर पाइबा रेडिकल कैटायन और केवल कैटायन पाइबा तो जते बडे गोटे रेडिकल भारिबो यू विल गेट माने मैक्सिमम चांस पाइबो रेडिकल कैटायन पाइबो न्यूट्रल मॉलिक्यूल एलिमिनेट करले हमें कैटायन न्यूट्रल मॉलिक्यूल तो भारी जाए गोटे कैटायन पाइबो ओके दीटा एलिमिनेशन अछि न्यूट्रल एलिमिनेशन एलिमेंट एलिमिनेशन और होची रेडिकल एलिमिनेशन और तमे जो पाइबो आयन दीटा फॉर्म आयन पाइबो गोटे होची रेडिकल कैटायन आ गोटे पाइबो केवल कैटायन तो जो हम से दीटा डिटेक्ट करियो रेडिकल कैटायन को मास पर डिटेक्ट कर पाइबो कैटायन को भी डिटेक्ट कर पाइबो किंतु खाली रेडिकल की खाली न्यूट्रल मॉलिक्यूल को कोनोसी मास स्पेक्ट्रा डिटेक्ट कर पाइबो नाही ओके सो हम देखिबा अल्किल हाइड देखिबो अल्किल क्लोराइड अल्किल ब्रोमाइड आयोडाइड क्लोराइड भीतर अल्किल आयोडाइड ता भांगिबा इजी हम पय कारण अल्किल आयोडाइड हम जानछन कोन आ लार्ज साइज तो ब्रेक करबा सुविधा अध्ययन अल्किल ब्रोमाइड अल्किल क्लोराइड था सेम इन केस ऑफ इथर देखा होची इथर केस रे समस्त भाबी अल्कोक्सियन भारिबो OCH3+ बट OCH3+ अपेक्षा बेसिक फॉर्मेशन हुए कोन R+ फॉर्मेशन हुए काहे कि ऑक्सीजन रो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम सो प्रिफर करेन ता पॉजिटिव चार्ज पे ऑक्सीजन प्रिफर करे ओके ऑक्सीजन चार्ज प्रिफर करेन से जो O जो सीधा सिग्मा बॉन्ड थो जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक हेले तमे पाइबो कोन से अल्किल
कार्बोकैटायन पाइबो बा अल्किल कैटायन पाइबो एंड अल्कोक्सी फ्री रेडिकल पाइबो ऊपर फ्री रेडिकल टा स्टेबल हे पारे किंतु कैटायन टा स्टेबल हबोनी सो एग्जांपल दिहाई दो RCH2Cl डॉट प्लस दिहाई छि मॉलिक्यूलर आयन दिहाई छि RCH2Cl डॉट प्लस भागे कौन देला Cl डॉट देला माने रहिला कोन हम RCH2 प्लस Cl डॉट नै गला पर हम कोन पाइबा RCH2 प्लस तो एठी कोन हेटेरो एटम टा डॉट नै गोटे फ्री रेडिकल नै पड़ेला तमे गोटे कार्बोकैटायन पाइलो इथर देखिबा ROCH2 RDS तो दिहाई छि जो अल्कोक्सी पार्ट ब्रेक हो आरो बॉन्ड पाइले कोन आर ऊपर प्लस पहुंचंती किंतु ओ ऊपर रहउची डॉट टा जो बॉन्ड ब्रेक होची ओटा बाहर जाई पड़ुची RCH2 डॉट ही पड़ेला प्लस टा रहला का ऊपर आर ऊपर केवल आर प्लस हैला तो एटा होची हेटेरोडिक क्लीवेज का इथर केस रे तो इथर केस रे बेसिक प्रिफरेबल कोड हाबो बेसिक प्रिफरेबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ अल्किल कार्बोकैटायन रादर देन योर इथर जो अल्कोक्सी कार्बोकैटायन थारो अल्किल कार्बन मोर प्रिफरेबल कारण इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऊपर पॉजिटिव चार्ज के भी प्रिफरेबल होय से प्रिफर करबोनी सब नेगेटिव चार्ज चाहिए जो नेगेटिव एटम तो नेगेटिव आसे बेटर ओके सो देन हमें देखिबा रेट्रोडायल्सिडर रिएक्शन ओके तो रेट्रोडायल्सिडर रिएक्शन कौन रिवर्स ऑफ डायल्सिडर रिएक्शन सो ऑलरेडी डायल्सिडर रिएक्शन में डिस्कस करछन जे कोन होतला डायल्सिडर रिएक्शन में डायल्सिडर रिएक्शन में हमें तो डिस्कस करथले देखछंती हम पाउथले डाइन एंड डाइनोफाइल ओके डाइन पाउथले और डाइनोफाइल पाउथले बा डाइन डाइनोफाइल होतले डाइन माने कोन गोटे दीटा डबल बॉन्ड थिला डाइनोफाइल गोटे डबल बॉन्ड थिला तो डाइन डाइनोफाइल नै कि तुमे गोटे अल्किन टे फॉर्मेशन करथलो और आउट यदि पर्टिकुलर वे कहबा तीनटा पाई बॉन्ड इन्वॉल्व होतले डाइन दीटा पाई बॉन्ड गोटे पाई बॉन्ड खारो गोटे पाई बॉन्ड होची डाइनोफाइल पाउथलो कोन फॉर्मेशन होतला दीटा नुवा सिग्मा बॉन्ड होतला आ गोटे पाई बॉन्ड होतला तीनटा पाई बॉन्ड रो गोटे पाई बॉन्ड होतला दीटा पाई बॉन्ड ब्रेक हेगी दीटा नुवा सिग्मा बॉन्ड क्रिएट होतला दैट इज आवर रिएक्शन थिला मुख्यतः डाइन और डाइनोफाइल भीतर एटी कोन हबो जो प्रोडक्ट जो साइक्लिक एल्कीन अछि ताकू नबा ताकू भांगी कोन करबा डाइन और डाइनोफाइल सेमती कराई देखो तो रीअरेंज करिवो बॉन्ड रे नकर से माउ धरे कर देबी सेटा को केमती बॉन्ड टा जो पाई बॉन्ड अछि त मूव करे कोठी एपडू आसीबो सिग्मा स्ट्रक्चर टा कोले जानि परबो पहिले बुझ परबो खाता देखो सिंपली डाइन और डाइनोफाइल निया है कि होतला कोन साइक्लो एल्कीन तो से साइक्लो एल्कीन के भांगी की हमें तैयार केले कोन हमें तैयार करछंती डाइन और डाइनोफाइल उल्टा कोले हमें डाइन नउतले डाइनोफाइल नउतले डाइन माने तो दीटा कंजुगेट एल्कीन नउतले गोटे और डाइनोफाइल गोटे डबल बनतला मॉलिक्यूल नउतले सेमाने मिसी कोन नउतले तुमको सेमाने मिसी तुम नउतले गोटे साइक्लो एल्कीन हमें को कोले उल्टा करते साइक्लो एल्कीन ने की पाइले डाइन और डाइनोफाइल जोटा तुम होतला साइक्लो एडिशन रिएक्शन रे बा डायल्सिडर रिएक्शन जो कहउछ सेटा हम डिस्कस करथि केमिस्ट्री पढ़ा डिस्कस करथि जो डाटा में कोनी पढ़थि सेते बेले तो हमें नेथले डाइन डाइनोफाइल पाउथले कोन पाउथले गोटे साइक्लो एल्कीन एठी कोन करा साइक्लो एल्कीन निहार फर्स्ट पार्ट तुम जानि छ साइक्लो फर्स्ट पार्ट में कोन आयनाइज करिला जे कोन से मॉलिक्यूल फर्स्ट पार्ट होची मास क्रिएटेड आयनाइज तो आयनाइज कला पर जे तोड़ प्लस रही क्रिएट हो निश्चित सेति पय ताको ब्रेक कले हमर गोटे प्लस रही जनरली प्लस टा कहाँ पर रहे डाइनोफाइल पर रही पार डाइन पर रही पार कह डाइन पर रही पार डाइन पर भी रही पार डाइन सॉरी जनरली प्लस टा रही डाइन पर तो जन कह सर डाइनोफाइल पर प्लस रहा ना यस डाइनोफाइल पर प्लस रही पार बट डाइन पर प्लस टा मोर स्टेबल बिकॉज तार आयनाइजेशन पोटेंशियल कम जो आयन फॉर्मेशन हुए से देखा जाता है आयनाइजेशन पोटेंशियल जहार आयनाइजेशन पोटेंशियल कम सेटा आगे फॉर्मेशन हुए अधिक स्टेबल तो डाइन रे कहीं प्लस रे कि डाइन टा अधिक स्टेबल ड्यू टू लो आयनाइजेशन एनर्जी से जनरली जो ताका जो गोटे साइक्लो एल्कीन भांगिले हमें जो पीक टा पाबे इंटेंस पीक पाइबो ड्यू टू डॉटर आयन का डॉटर आयन दैट ऑफ डाइन जो फॉर्मेशन हम तापर जो आयन टा हम डाइन ने जो प्लस रहिबो सेटा मोर स्टेबल ओके तो डाइनोफाइल ले जो प्लस रहिबो बहुत लेस स्टेबल हो से ता पीक टा बहुत लेस इंटेंस आसे और डाइन ऊपर जो प्लस टा रहिबो ता पे जो पीक आसे सेटा मोस्ट इंटेंस अधिक इंटेंस आसीबो इन केस ऑफ फ्रैगमेंटेशन ऑफ साइक्लो एल्कीन
तापर देखिए हाइड्रोजन ट्रांसफर जनरली हमें पाइबा कोठी एटा जनरली हम पाइबा एरोमेटिक कंपाउंड केस रे तो एग्जांपल तो कार्बोक्सिलेज रे नै है कि देखो ट्रांसफर ऑर्थ रो गोटे हाइड्रोजन ट्रांसफर है कोठी ऑक्सीजन को सो now the six member transition state देखि formation हुए very simple rearrangement हाइड्रोजन ट्रांसफर गोटे कहि परिबो तापर तो अमाइड भी पड़थि देखो अमाइड देखो आर NHCO NHCO पर जो CH3 अछि गोटे H ट्रांसफर इज कोठी की नाइट्रोजन ऊपर को हेगी सेटा NH2 प्लस एनिलिनियम आयन हे जाई छी ता सब कोन अछि ता सब गोटे कीटिन CH2 डबल बॉन्ड C ओ गोटे फॉर्मेशन हे जाई छी तो हाइड्रोजन ट्रांसफर रिअरेंजमेंट टाइप रिएक्शन एतिक भीतर का डाउट अछि पचार हमें नेक्स्ट क्लास डिस्कस करा मार्क लिपिड करना जी के अप डाउन रोज हम सेटल असुविधा गेला जी नेक्स्ट क्लास हम डिस्कस करें मार्क लिपिड रिअरेंजमेंट क्या डाउट अछि तो पचार दियो ओके ठीक अछि काली हमें 10 थेटा राइट स्टार्ट करियो मार्क लिपिड रिअरेंजमेंट और डिफरेंट फ्रैगमेंटेशन रूट्स एज वेल एज प्रॉब्लम्स ओके थैंक यू डाउट थियो काली पछिन परियो